Hello friends, good morning. Welcome to my amazing Saparasa channel, Physics Universe. I hope you are all fine at your home and we are enjoying this online lectures. So guys, today's our topic is concept of current. Earlier we discussed about concept of charge. चार्ज के बारे में हमने जाना था, उसकी फॉर्मूलाज के बारे में हमने समझा था. Q is equal to NE. Clear? That's the simple formula of charge. नाउ करंट की बात है तो करंट कोई भी कंडक्टर में कैसे फ्लो होगा. सो करंट इज सिंपल फ्लो ऑफ सम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट. जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसमें से करंट फ्लो होगा तो बहुत सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर पासिंग थ्रू यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया that is called current. अब यहाँ पर जो टाइम लिमिट है उसको भी हमें अंदर इंक्लूड करना है, मतलब पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में ही उतने इलेक्ट्रॉन्स उस क्रॉस सेक्शन एरिया से पास होने चाहिए. सो इफ आई राइट द फॉर्मूला ऑफ करंट दैट इज I is equal to Q by T. So Q is the total charge passing through unit cross section area in particular time interval t. Clear? So I is equal to Q by T. Okay, now we are talking about unit. So unit, from this formula, unit will be, we know that Q is the charge unit is coulomb and time unit is second. So this is the first unit, coulomb per second. But if we are talking about SI unit, then SI unit is given to this current is called ampere, which is denoted by capital A. Clear? So current अब हमें पता चल गया, उसका यूनिट के बारे में पता चल गया, बट जो यूनिट्स की रेंज होगी उसको अगर मैं लिखूं तो सपोज के किसी ने बोला 1 मिली एम्पियर, सो दैट रेंज इज 10⁻³ एम्पियर. सपोज करंट माइक्रो एम्पियर में है, सो दैट रेंज इज -6 एम्पियर. क्लियर? ओके. आफ्टर दैट we know that Q formula, Q is equal to simple N into E. Put this formula here, so that become I is equal to NE upon T. We know that total charge, that is number of electrons and electron value itself. So I is equal to NE upon T. Okay. अब यहाँ पर अगर मैं वैल्यूज रखूं और N की वैल्यू फाइंड कर पाऊं तो if I is equal to 1 ampere, okay, T is equal to 1 second, okay, E value we know that 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb, put it there. So N will be, क्या होगा N? It will be 6.28 into 10⁻18. तो इसको अगर समझना है तो ऐसा समझेंगे कि अगर करंट 1 एम्पियर है, टाइम इंटरवल 1 सेकेंड है और उतना चार्ज अगर यूनिट क्रॉस सेक्शन में से पास हो रहा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर पासिंग थ्रू यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया it is 6.28 into 10⁻18 number of electrons are passing थ्रू यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया. सो तब जाके हमें 1 एम्पियर जितना करंट मिलेगा. क्लियर? सो दिस इज हाउ वी गॉट द करंट फॉर्मूला. अब यहाँ पर जो ये करंट फॉर्मूला मिली उसमें हम अलग अलग वैल्यूज पुट करके अलग अलग टाइम इंटरवल अंदर रख के फिर करंट वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं. सो that's our concept of current, guys. Thank you so much for viewing my video lectures till the end. That means a lot to me. Please like my videos and subscribe my channel.